Well, so live singing is a massive subject. There's so much you can learn, so much that can go wrong, and so many factors that play a part when you're performing live. But before I begin to give you guys some kind of technical and tips that can help, I would like to share something which is very personal. When I was a child and I went to perform on stage, what happened to me and how I overcame that. I always say for any performing artist, सबसे important है, एक तो obviously अगर आप गाना गाते हो, musician हो, vocalist हो, then obviously to take care of your vocal cords. But more than that, sometimes it becomes very important for the person to take care of their mind. Because mind नहीं चलेगा तो body का कोई भी part नहीं चलेगा, वो आपके vocal cords भी नहीं चलेंगे. So it's very important to have some kind of control, or what do I say it? Your mind needs to function really well to be able to have the nerves to perform on stage. और बहुत सारे और भी factors है. As I was saying, I would like to share one experience of mine, quite a few experiences, episodes of my life. जब मैं बचपन में स्टेज पे परफॉर्म करती थी, I had mentioned this earlier, in competitions, मुझे बहुत डर लगता था और मैं stage fright से भी ज़्यादा I would freeze and I will sing it wrong, my pitches will go off, which usually never used to happen. मैं हैरान हो जाती थी कि कैसे क्यों क्या. So I used to, my mind would develop this fear that people are going to judge and I'm going to let everyone down कि मैं ढंग से गा नहीं पाऊंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. You know when that changed? It changed मैंने जब बहुत रियाज किया, जब मैंने वो एक कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया कि नहीं, अब मुझे अपने सुरों पे है कंट्रोल, मैं जाएगा नहीं वो किधर, तब से मेरा चेंज हो गया. And also when I told my mind, even if it is a competition, even if it is somebody is comparing your music with somebody else, तुम्हें जज करेंगे, वो मैंने अपने माइंड को बोल दिया कि नहीं, मैं परफॉर्म कर रही हूँ लोगों के लिए, मैं अपने लिए परफॉर्म करूँ एंड ऑटोमेटिकली वो लोगों के लिए भी होगा. So there were many factors which helped me. Now I like malfunction हो जाए, माइक खराब हो जाए, उधर ड्रम फट जाए, कुछ भी हो जाए, it's like I just still enjoy. It's like I feel that the stage is my den and it's my home and nobody can do anything. I know it the best. So वो एक confidence जो है ना, which is very important for stage. One of the most other important things is that आपको अपने आप पर, अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. बिकॉज इन स्टूडियो, इन रिकॉर्डिंग्स, आपके खामियों को आपके साउंड इंजीनियर छुपा देंगे, बट जब आप लाइव के लिए जाओगे, देयर इज नोबडी टू डू दैट. एंड बिकॉज स्पेशली इन इंडिया, सपोज व्हेन वी परफॉर्म, सबके उतने बजट्स नहीं होते कि दे कैन एक्चुअली पुट अ मिक्सर और समथिंग वेयर दे कैन ट्यून योर वॉइस. और अगर आप बेसुरा भी गा रहे हो, उसको ट्यूनिंग में डाल दे, या फिर अगर आप थ्रो गंदा दे रहे हो, उसको बढ़ा सकते. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन इन योर रिकॉर्डिंग स्टूडियो. योर इंजीनियर कैन डू दैट फॉर यू, बट लाइव में इट्स वेरी डिफिकल्ट. और क्या होता है, लाइव में यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग with other musicians. They will play well, and if you go off, that is just not okay. Live के लिए projection चाहिए आवाज की. Like you have to have enough breath and control over your breath to be able to throw it, make it soft, not hurt your voice. क्योंकि क्या होता है, जब हम live performance करते हैं, we wear in-ears or in-ears मतलब in-ear monitors, और otherwise हमारे सामने monitors, physical big speaker monitors वो रहते हैं, वो सुन के हम गाना गाते हैं. अगर हम ने बैलेंस सही नहीं किया, ये सब जानना जरूरी है. सो आई एम श्योर देयर आर मेनी ऑफ यू हु आर ऑलरेडी लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, यू आर अवेयर ऑफ दिस. बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आप अपने आवाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हो अगर आप ढंग से सुन के नहीं गाते हो. व्हेन वी डू नॉट हियर प्रॉपर्ली, वी कैन नॉट सिंग प्रॉपर्ली. यू नो व्हाई? बिकॉज फॉर मी एटलीस्ट 70% ऑफ माई सिंगिंग इज फ्रॉम माई ईयर्स. हम लोग एक सुर जो लगाते हैं, इट्स सपोज दिस इज सुर ए एंड दिस इज सुर बी. मुझे बी लगाना है, अगर मैं ए सुनूंगी उससे मैं बी रिलेट करके बी सोचूंगी, अच्छा ये ए है तो उससे थोड़ा सा कम ये बी होगा. और ये ब्रेन फंक्शन कर लेता है जिनको सुरों की समझ है. अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? बिकॉज आई कैन नॉट हियर माई ओन वॉइस, आई ट्राई टू प्रोजेक्ट मोर
जहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना है, and I will hamper my voice. My breathing will be all over the place, so I will hurt my vocal cords. और हमारे शरीर में सबसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं हमारे vocal cords. They are so, इतना पावरफुल आवाज निकाल सकता है, लेकिन सबसे इतने छोटे और सॉफ्ट एंड vulnerable होते हैं ना vocal cords, that you really need to take care of it, क्योंकि वो हाथ ऊपर कर देगा after some time, and then you will, no matter how much you cry, you won't be able to. Another thing, if your balance is not okay on stage when you're performing live, तब आपके कान खराब हो सकता है, because if the sound is too loud and you're singing, you're also screaming, that in-ear के बाकी instruments भी जोर से बजा रहे, your eardrums will be gone. Like मेरे साथ हुआ है, my right ear I had problems and I still have it. Once eardrums start hurting, like if they, अगर वो खराब होना चालू करते हैं ना, then तो गए, बिना कान के आप गा नहीं सकते, बहुत कम लोग गा सकते, वो कुछ अलग लेवल का स्ट्रगल होगा फिर तो, मतलब that is like the worst thing that can happen to any musician, because you cannot not even play something without listening. So for me, live music is just, it's power, it's nirvana, it's like there are no words to actually explain how one feels. जो adrenaline rush ये सब तो है, audience को देख के अगर वो accept कर रहे हैं आपको, वो प्यार आपको immediately उधर ही मिलता है, but उसके लिए बहुत मेहनत होती है, उसके लिए आपको सच्ची में अपने सुरों पे, अपने गले पे, अपने कान पे, अपने माइंड पे, हर चीज में you have to have control and you have to take care of it. कुछ साल आप initially कर लोगे, but उसके बाद गला बोल देगा. And you know when you'll realize it, when you actually go back to the recording studio to sing something, you'll know that you're losing control of the throw of your voice. You're losing control on air को कैसे छोड़ना है, वो control नहीं होगा, खो जाएगा, क्योंकि गला, vocal cords are strained and stressed. So yes, live music, live performance can be tricky, but it is just extremely fulfilling. I really strongly recommend every musician, especially vocalists, please take care of these small but very important things when you perform live. Live singing के लिए warm up करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बोला, अगर आप warm up सपोज नहीं करते हो और जाके उधर आप जो भी थ्रो देने की कोशिश करते हैं, and always on live stage, on stage you'll have to throw more, because for example आपके पीछे एक तो स्टेज का साइज पता नहीं, so, पीछे अगर ड्रम्स बज रहे, so drum is like a very loud instrument, so you'll have to microphone will give the sound to outer, मतलब speaker से people in front of you will get to hear you loud, but आप खुद को microphone से नहीं इतना सुन पा रहे हो, in ears या फिर normal monitor से सुन रहे हो, so you are also fighting with the, like trying to hear yourself out above the other instruments that are playing. So basically there are so many other instruments, and even other, suppose chorus artists, or there can be innumerable musicians, players on stage, and उन सब के साथ आपको अपना voice भी खुद को सुनना पड़ेगा, and you'll also need to hear them, because for cues, like what they're doing. So for that, it's important that you warm up your voice, and your voice is functioning the best. इसलिए warm up exercises are very important. अलग तरीके के होते हैं, different registers के you need to warm up, your head voice, your chest voice, for women your middle voice. There are so many ways to do it. The breathing exercise, अगर वो show, मतलब stage पे जाने से पहले आप कर लोगे, you have no idea how much it helps and how much it actually saves you from hurting your own voice. So yeah, there are different exercises. You can ask your teacher. They will also help you out.